Okay, let's start the training thing. So time will be different. Every day is a different time, I think so. Because Okay. if you are available, then we can go in the morning as well. Maybe 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., depending Yeah. on the availability. Okay, so it is possible for you as well, na? Yeah, actually, I have done with my previous organization, so Mm-hmm. I can join anytime. But if is there any interview schedule, so you need to Mm-hmm. manage according to that. Yeah. We for 1 or 2 days or maybe 3 4 days we will manage. Don't Okay. worry about that. Okay, so let's start with the some common things, common questions that how much time will it take to learn Selenium? It will take around 2 to 3 weeks to learn Selenium, but to learn it professionally, you will need to say about 6 to 8 weeks, which includes framework, exercises, and all. Okay, do I need to know programming? Yes, you need to know programming. One of any programming language. Okay, right now, in your case, I will prefer you to go with the Java because as a fresher, Selenium, as a fresher, Java opportunities are there because the old projects are in the Java, so they will continue to be in Java. Okay. Okay. Okay, so that after that, when you go inside this line, after that, if you this go for the new project, then you can switch the language. But for further, for the fresher and for the first time, I will say Selenium with Java is the better option. Okay. Okay, so now how do I learn Selenium? It's a TestNG is the main component. Okay, then Maven, then Selenium. Okay. So these are all the things. And if you see in our site, this is the website for our Selenium with Java. And say if you see course detail, then these are the course details. Okay. These are the course details that we are going to follow. Okay. And we will cover one of the frameworks. The next question is that do you teach any real-time project? Yes. And you can say project or framework, it's the same thing. Okay. Okay. Mm, okay. So we will cover one of the framework. Okay. Now you can say uh, so we are going to go for the IDE, and I think so. You know that what is an IDE? Yeah, the text editor we use, like, Integrated Development Environment. It is used for yeah, you can say coding purpose, where we can write the code, write the test cases. Okay, and then that, and we are going to use Eclipse. Okay. Eclipse. So Okay. yeah, we how to download Eclipse? Just go to Google and say download Eclipse. Okay, here is the first link. Now here say don't go for this button. Go for download packages. Okay, and go for this Eclipse IDE for enterprise Java and web developers. Go for this one. Windows and according to your system, you can click on any of these. When you click on this, there is a package. You have to extract that package and copy all these files. This is like these files. I have put it in D. There is no exe, nothing like that. You just have to double click on this Eclipse button. But before that, uh, you have to install JDK into your system, Java JDK. Is Okay. it similar for Mac as well? Yeah, it's a similar for the Mac, but I will prefer you because you are going in the company. Most of the companies, 98% companies are using Windows. Okay. That is a Mac thing is it's the same thing. No, Uh, actually, uh, there is a issue. Like currently, I'm having Mac. My company laptop was Windows,
I need to buy another Windows or still Because if you see, use with outdated Mac. yeah, it's the same thing. You can say one of my students is also working in the Mac. It's one is the same thing. Okay, so you need to know that how to install Java JDK into your Mac. Okay, Okay. and because I have done most of the things in you can say Windows, so even I don't remember the how to that JDK thing. If you stuck somewhere, just tell me. I will get back to you for that. But it's a very easy thing. Just say download Java JDK. So go for 25th is the latest version. You can go for that as well. Okay, and 21 is the stable old stable version. You can go for any of these. Go for here. You can click on the Mac operating system and go for the installer thing. Okay, Okay. don't go for this archive or according to your system. What is your system? It's ARM 64 or it's into 64. Go for the installer thing. Okay. Okay, okay, don't go for these files. No, And don't if go we for, go for Windows also required installer only. yeah, Windows is into 64 installer according to your system needs. My system needs, I think so. I don't know, remember the thing, but I think I have done this thing. A must installer, or maybe I done this thing. I don't know. I have done long time back. But this is the thing. The Windows in the most of system, this will be the thing. But you have to go for the installer thing. Mm-hmm. Okay, Okay. don't go for the complex archive. Otherwise, you have to place all the files manually by yourself. Mm-hmm. Okay. Okay. Now, after that, installing the JDK, then go to your command prompt and just type Java. Now, if you see this type of thing, then that this means Java is there into your system. Okay. Hmm. Okay. So Okay. if I remember, say uh, JDK setting for Mac. If I remember this, I think this will just go for the any link if you because uh, also the Mac settings are a little bit different than the Windows. Okay, so Mm-hmm. just Okay. be sure that you have because I think the new Mac system, this environment variable path Java underscore home is there automatically. Okay, Okay. but in the Windows we have to give the path, like we have to go for environment, edit the system environment. Okay, then environment variables, and if you see over here, Java home. Okay, Mm-hmm. now basically you can say most of the time, 99% of the times, Java will be C program files, yeah, Java, then JDK 21. Then you have to give two paths. First of JDK 21. Okay, here you can see over here. I have given the path of JDK 21. Okay, and Java underscore home is in the capital letters. Okay, then there Hmm. is a variable path. Okay, now edit. Here you can see percentage Java underscore percentage slash bin. Same. See, slash bin. Okay, slash should be this like only. Okay, so these two things have to given by you in the Windows. Okay, now I will close this. Now, once you uh, download this one, no need to install anything. Just copy this file in some folder, like I have folder copied in my D drive in the Eclipse,
and just click on this icon every time when you want to open the Eclipse IDE. Okay, so there is no exe. These are simple package. Okay, now suppose today is 12 November. Okay, now Every time it will create a new workspace, right? yeah, if I change it, it will keep the new thing. Now if you see, I don't right now I don't have any project, so I just close it. Now if I again click on it, now you can see 12 November, 6 November, one any number of workspaces you want, you can make as and many. Okay, Okay. again I will close this. Now, first of all, we have to understand the basics of Java before moving forward. Okay, so you know anything about Java? Anything? Yeah, I have basic about Java that it is a programming language, object oriented, similar with C++, Mm-hmm. and we Okay. have used different like Mm-hmm. it's an object oriented from programming, so it is based on the inheritance or some common concept of C++. Okay. So, do you know any? Do you remember any concepts? Any? Like Okay, leave it. I will get it back to you. Now, suppose if I want to go for the new Java project, right now we are going for the Java coding, so we have to go for the new Java project. Okay, file, then mhm. say new and go with other, and here you can see Java and new Java project. Okay, now say next. Okay, now always remember to uncheck this one, create model in folder, otherwise you will get many errors. Okay, and give your project name. Suppose I will name it as my first project. Okay, just click on finish. Okay, after that you can see your package explorer window right over here. Okay, now you have GRE system libraries, which we not need to do anything with this. Here you can see source file. Inside source file, I will make my first package. I say first package, or you can say first class. Always remember that your package name should be in small letters. Okay, and suppose right click on this package and say new class. I say first. It is really required in like while you are creating the package in source file only. Like why we use source file? Why we use? सोर्स फाइल you're saying ना कि सोर्स फाइल के अंदर ही आपको जो भी बनाना है वो क्रिएट Yeah, करना है तो yeah, yeah, सोर्स फाइल yeah, के अंदर yeah, ही yeah. क्यों करते It हैं? is compulsory. It is compulsory. Some you will get to know in time why it is compulsory, but it is compulsory. Just write like this. You if right click on your folder, you can now suppose if I make it on and just click on this public static void main as well. Okay, here first class, and always remember to start your name your class name. It's of capital letters first capital should be letter. Now you can see it's a very small, can say font. Yeah, if you're able to, not able to say see this thing, now go to preferences, say general appearance, color and fonts in the basic thing, text font.
click on edit. Okay, now say bold, and you can even make it bigger as much as you want. Okay, click on apply. You see, Yeah. okay, now you are able to see clearly. Okay. Mm-mm. Mhm. Now this is how पैकेज को हमेशा स्मॉल लेटर्स में क्यों लिखते हैं? बट जो हमने क्लास uh, बनाई है वो क्लास तो कैपिटल। ये या इसका आप कह सकते हो कि मतलब this is compulsory. Suppose if I go for the new class, now say I will say second class. Let's say type name is discourage. By convention, Java type name usually start with an uppercase letter. It's a convention thing. Okay, it's they told you. Now suppose if I say second class. Okay, now I will finish this. Okay, now suppose it has made you this type of class. It is not going to give you any error. That is not the thing that it is going to give you any error. But it says that you should do this. Okay. नेमिंग कन्वेंशन राइट। Yes, naming conventions you can say. Okay, and package name. And you see that this package SRC it starts with a small. So these are the naming conventions that they ask us to do in this way. Okay, because when we do you can say Maven projects, you will see that we have folders inside the folders, and all the folders names are in the small letters. Okay, ओके। okay. So this is how your class looks like. Okay, now again a very good interview question. What is the scope of this class? What do you mean by scope of this class? लाइक कि अगर मैंने ये क्लास बनाई है तो इसका स्कोप कहाँ तक है? सिर्फ इसी Yes, फंक्शन में या इसी जगह पे यूज होगा या ऑल ओवर द प्रोजेक्ट हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं? स्कोप का मतलब होता है कि इस क्लास का हम बोलते हैं एरिया क्या है, इस क्लास का एरिया जिस ब्रैकेट से स्टार्ट होके इस ब्रैकेट तक का है। ओके। ओके, स्कोप इसको बोलते हैं कि जो भी फंक्शंस आएंगे अंदर, जो भी कुछ भी आएगा इसके इस ब्रैकेट के अंदर, वो सब इस क्लास का पार्ट है, इसलिए वो स्कोप ऑफ क्लास है। तो हाँ, वो इसके अंदर आएगा सब कुछ। ओके, नाउ सपोज मैं करता हूँ सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट SYSO। सो SYSO कंट्रोल स्पेस बार। तो ये आपको ना, अगर मैं ऐसे लिखूं द्वारा SYS मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाऊं, तो ये मुझे सारे इंटरनल फंक्शंस दिखा देता है इसके। इंटरनल फंक्शंस, इंटरनल क्लासेस, कुछ भी। ठीक है ना। तो अब भी मैं SYSO करूंगा तो मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट लेनी है, और मैं लिख देता हूँ सेलेनियम। नाउ रन करता हूँ, ये कंसोल विंडो में सेलेनियम लिखा आ जाएगा। ओके, नाउ ये अगर अब देख रहे हो तो ये फंक्शन है एक मेन फंक्शन, जो कि इस क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्लास। व्हेनेवर आई रन द क्लास, द compiler will come here for the first time in the main. Okay, it is the inbuilt thing. Okay, uh, and what is this static, what is this void, we will cover all this, and you will get to know that why main function is static, कि main function static क्यों है। ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी स्टैटिक क्या होता है, void क्या होता है। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा इस चीज की। आई एम नॉट डिस्कस गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल ऑफ दिस थिंग राइट नाउ। ओके, ओके। राइट नाउ मैं स्मॉल स्मॉल चीजें बताऊंगा आपको कि ये कौन सा कैसे करना है, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। देन slowly and slowly we will cover the basic knowledge of Java which are required to learn Selenium, and it is more than enough
if I go here and you can see the website, the thing operator loops, array functions, Java object programming. Okay, it is more than enough. These things are more than enough. Okay, so you don't have to go too much beyond the point. It's like if for learning Selenium, it is more than enough. Okay, now Okay. so now suppose if I want to make an object of this class, how can I make it? Object in the sense. Object in the sense I want to suppose this class has some functions and I want to use these functions in another class. So I have to make an object of this class so can I can use all the functions. You know about the object thing or not the thing object Um, oriented? yeah, a little bit. लाइक कि मैंने कहीं पे कुछ फंक्शन बना के रखे हैं और अब मैं किसी और जगह पे उसको कॉल करना चाहती हूँ किसी अनदर क्लास में या क्लास फिर में. सेम क्लास में भी कर सकते हैं ना. Hmm. Okay, let's leave this topic right now. Now you know that there are various data types: integer, you can say string, you can say boolean, you can say double. Okay, so these Mm-hmm. are all our string. These are all our data types. Yes. You understand the data type now? If I say int I equal to 10, so what does this represent? लाइक जो आई है वो एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा जिसमें हमने 10 वैल्यू दे रखी है उसको. Suppose if this question is asked in the interview, so how will you answer? दिस इज एन इंटीजर टाइप and this is storing 10 value as an integer. I is an variable who's storing a value of 10. No, that is wrong thing. Okay, so let's understand this first. This is a main interview question. And I think so in the previous class in the Python as well, I have told you to write down all the interview questions in the Excel thing, day Mm-hmm. wise. Okay, just the thing is because I have taken many interviews, so I know that how the things can be there and what are the questions they are being asked. It's not the same thing 100% same, yeah, but it's a 60, 70, 80% sometime it will be there. Okay, now what does int I equal to 10 means? Now, if I go over here and in the paint, I say, when I say int I equal to 10, now 10 is something that will, you can say, acquire some memory space. Here, 10 is stored. When I say int I equal to 10, 10 will acquire some memory, some area in my memory space, and I is representing that memory space location. I is not at all 10. I is not at all 10. Just remember my point. I is not at all 10. I is representing that memory location where 10 is stored. Now, somebody says, okay, then prove it. Okay, come back to our here. Now say int, say this is A, this is B, or you can say, sorry, uh, I say Z equal to say 20 and say int Z y equal to 30. Okay, now if I print all this, I say value of I plus I
and say value of z. Okay, then plus value of y. Okay, now I know that if I print it, I will definitely get 10, 20, and 30. Okay, now if I run this now 10, 20, sorry, I z z uh, z. Okay, now run this again. Now z is 20. Now when I do this thing, I equal to z, z equal to y. Now y equal to I. Okay. Now, now what will be the value? I equals Z and Z equal Y and Y equal I 10, 20, 30, 20, 30, 10. So it will print 20, 30, and 10. 10 again. Which one? 20, I 30, and 10. 20, 30, and 10. Hmm. Okay. So you are saying uh, 20, 30, and 10. Okay. Now if I run this, 20, 30, 20. Why? Okay. Now Mm-mm. let's understand this. Now there are three memory allocation. Yes, three memory allocation. Okay. And I say here 10, 20, and 30. Okay. Uh, I is representing this, and I think so. Okay, then Z is 20 and Y is 30. Z Hmm. is 20. This is Z. It is 20, and Y is 30. Okay, now what will happen when I say I equal to Z? Now, what will I do? I will stop referencing towards 10 because it will start referencing in this point. I will stop referencing towards 10 and it will start referencing where Z is referencing. Z is referencing towards 20. Y. Yeah. So it will start referencing towards this. Okay, when I say Z equal to Y, Z will stop referencing towards 20 and start referencing where Y is referencing. Y is referencing Hmm. 30, so it will start referencing towards this. Now in the last step, when I say Y equal to I, now y will stop referencing towards 30 and it start referencing where I is referencing. Now I is referencing where? 20. 20. Okay. That's why it start referencing towards 20. Okay, that's why y is 20 because I is referencing towards 20. Hmm. Okay. Got it? That's why when I say int I equal to 10, then this means there is a memory location allocated to that 10 and I is allocated to that variable, referencing to that variable. It is very important point to understand the concept of object.
Right now, when I Okay. say int I equal to 10, it means I is representing, I is pointing towards that memory space where Allocation. 10 is stored. I is not at all 10. Okay, so that's why you can prove this. You can see this. That's why it is memory. It's reference towards that memory allocation. That's why if I equal to z, I will stop here. Z equal to y. Z will start referencing towards here. Okay, and y is I. Y will stop referencing here and reference there where I is referencing towards 20. Okay, so this is a concept that clear us that they that int I equal 10 means that 10 is stored in the memory location and I is pointing towards that memory location. Okay, now suppose when I So say what could be mm, the like as per the interviewer aspect, what could be the correct answer? this is the correct answer. Int I I is equal to just a location where 10 is getting stored. I is just not a location. It's a variable. Now, why? What is that thing? It's a reference thing. Now, suppose you live in Pune. I think so. Uh, you are in Pune, na? No, I'm from Uttarakhand. Okay, you are from Uttarakhand. Suppose you are going to Uttarakhand in some city and say that your city, आपकी city वहां पर एक माइलस्टोन होता है जैसे हम देखते हैं ना वहां पर लिखा होता साइड में कि समझ लो देहरादून लिखा हो देहरादून 10 किलोमीटर अवे Yeah. तो वो माइलस्टोन एक रेफरेंस है वो माइलस्टोन देहरादून नहीं है Mm-hmm. वैसा Okay. ही सेम थिंग आई इज अ वेरिएबल आई इज अ वेरिएबल दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट मेमोरी लोकेशन आई एक वेरिएबल है जो कि उंगली कर रहा है उस लोकेशन की तरफ जहां पे 10 स्टोर्ड है मेमोरी में ओके दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर यू कैन गिव टू योर इंटरव्यूअर दैट I is a variable, I is a variable, and it is pointing towards the memory allocation where 10 is stored. I is not at all 10. I is just pointing towards. Like here, I have show you that it is pointing towards that memory location where 10 is stored because when I say I equal to 10, 10 is somewhere in my memory and I don't know where that memory location is. So I will tell me that there is a variable 10 that is lying over there in the memory. ये memory में वहां पर पड़ा हुआ है. Okay. 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 So this concept has to very clear because when we going for the object thing जब हम object के लिए पढ़ेंगे तो ये concept clear होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई भी ज्यादा लोग बताते नहीं हैं कि ये कंसेप्ट क्या है ठीक है ये पता होना जरूरी है कि when कोई भी पूछे कि when int I equal to 10 means what that means you have to say that कि सर 10 एक जगह है मेमोरी स्पेस में और I उस जगह को रिप्रेजेंट करता है वो आपसे पूछेंगे कि क्या आई 10 है बोलो नहीं सर वो मेमोरी स्पेस को एरो कर रहा है वो मेमोरी वो बता रहा है पॉइंट कर रहा है कि वो वहां पर पड़ा हुआ 10 पर आई कभी भी 10 नहीं है वो बोलेंगे प्रूफ करो सर प्रूफ कर सकते हो आई इक्वल टू 10 और आप ले लो सर जेड इक्वल टू 20 जब आई इक्वल टू जेड करोगे तो वो उधर रेफरेंस करने लग जाएगा जहां पर जेड रेफरेंस कर रहा है जो कि 20 है Mm-hmm. ये सबसे इजी पॉइंट होता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं दे विल गोइंग टू कंफ्यूज यू बिकॉज दे वांट दैट हाउ टाइप ऑफ नॉलेज यू हैव ओके Okay. तो नाउ the next thing is the concatenation operator. By concatenation, I mean suppose if I want to combine these two, 10 and 20, that means 10 plus 20. I can Mm. say, so say I.
plus Z, or you can say 10 plus 20. Okay, now once I say I plus Z, अब दोनों का डाटा टाइप सेम है, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 10 और 20 मिलकर हो जाता है 30। सॉरी, मैंने क्या लिया है, आई प्लस जेड। आई ओके, 20 था, जेड 30 हो गया या था। यहाँ पर चेंज हो गया था ना। हम्म। ओके, नाउ 30 आएगा, ठीक है। अब ये कंकेटिनेशन ऑपरेटर है, लेकिन अगर मैं लूँ यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल स्ट्रिंग, कोई वेरिएबल लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ए से सेलेनियम। ओके, नाउ अगर मैं इनको ऐड करूं, अगर मैं बोलूं आई प्लस ए, क्या बनेगा? आई प्लस ए, ये तो ऐड ही नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप है। चलो हम इसको ऐड करके देखते हैं, आई प्लस ए। ओके, नाउ रन करूं अगर मैं, देख रहे हो क्या हुआ? ऐड हो गए। पेंसिल नहीं ऐड हो गए। ऐड तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, वो स्ट्रिंग है। एक चीज याद रखना, कोई भी डाटा टाइप, जब भी स्ट्रिंग से कोई भी डाटा टाइप, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो डबल हो, जब भी वो स्ट्रिंग से अटैच होना चाहते हैं, तो वो अपने आप ही स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लेंगे। डिलीट कर देता हूँ, आता हूँ इंट ए इक्वल टू 100, ए इंट बी इक्वल टू 200, and say I'll string x equal to selenium, okay, and say string y equal to training। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करूँ पहले a प्लस बी को, ओके, देन मैं कंबाइन करूँ x प्लस वाई को। अब ये दोनों तो सिंपल है कि हाँ, दो स्ट्रिंग है तो एक 300 और सेलेनियम ट्रेनिंग। ओके, सपोज अब मैं करता हूँ a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, एंड एक चीज और करता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी। नाउ अब मुझे पता है कि ऊपर वाले दो का क्या रिजल्ट है, ए प्लस बी, 100 प्लस 200, चलो भी 300, और नीचे का सेलेनियम ट्रेनिंग। ओके, अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दी है ना, तो यहाँ पर ये स्पेस लेगा। स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है। अब मैं नीचे दो वालों की बात करूं, क्या रिजल्ट आएगा? या साक्षी, क्या आएगा इसका रिजल्ट? हेलो। या सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट, जस्ट ओके जस्ट ओके, सेकंड। सो पहले वाले में आएगा 300 सिलेनियम ट्रेनिंग, और हाँ हाँ, सिलेनियम के बाद स्पेस आएगा। हम्म, और दूसरे वाले में आएगा सिलेनियम स्पेस ट्रेनिंग प्लस हम्म, 300। ओके। आपने इसमें बोला सेलेनियम स्पेस ट्रेनिंग 300, और ऊपर वाले का आपने बोला 300 300 सिलेनियम ट्रेनिंग।
ओके, सो लेट्स रन दिस। ये तो ठीक है। लास्ट वाले ये काउंट नहीं करता क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में? याद रखना एक बात को, कोड कभी भी मूव करता है लेफ्ट टू राइट। अगर मैंने ओके। अभी सिंपल है, एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर ये चीजें हैं, अब वो करेगा, हम्म। वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। ठीक है ना। ओके। एक्स प्लस वाई क्या है? स्ट्रिंग। अब एक्स प्लस वाई हो गया सेलेनियम ट्रेनिंग, ये आ गया। ओके, हम्म। अब जब वो ए से ऐड करना स्टार्ट करता है, तो ए है इंटीजर, ये है सेलेनियम ट्रेनिंग है स्ट्रिंग। तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज जो स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट करना चाहती है, ये प्लस साइन कनकैटिनेट ऑपरेटर होता है, वो स्ट्रिंग के साथ जुड़ना चाहती है, तो वो जो डाटा टाइप है ए, ये अपने आप स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो ये स्ट्रिंग है, 100 इसके अंदर स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग की तरह इसके साथ ऐड होता है। अब ये और फिर फिर जो दोबारा। अगला नंबर था वो इंटीजर था, तो पहले वाला स्ट्रिंग था, तो उसने 200 यस, उसके साथ ऐसे ही डिस्प्ले कर दिया। अटैच कर दिया। ओके। ओके, नाउ ये हो गया। अगर मैं बोलूं सेम थिंग बट यहां से, नाउ, और अब मैं अगर रन करूं तो आप देखोगे सेलेनियम ट्रेनिंग सेम, 300, क्योंकि वो क्योंकि पहले, ब्रैकेट आ गया था। यस, ब्रैकेट वाली चीजें पहले सोल्व होंगी। हम्म। तो जब भी हम स्ट्रिंग से काम करें, हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से। कि क्यों? क्योंकि अब अगर आप देखो, स्ट्रिंग के अगर मैं पास जाऊं, अगर उसमें उसको कंट्रोल, आप देख लो जावा डॉट लैंग्वेज डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, ये एक इनबिल्ट क्लास है जावा के अंदर। लेकिन अगर ओके। मैं यहाँ पे जाऊं इंटीजर, इसके अंदर कोई कुछ नहीं हो रहा। अब देखो हम्म। इसका कोई भी नहीं, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल दबा के स्ट्रिंग के पास जाऊं, कंट्रोल अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूं, तो ये स्ट्रिंग डॉट क्लास है, ये एक क्लास है जावा में, इनबिल्ट क्लास है। ठीक है, तो और जो भी चीज स्ट्रिंग के साथ ऐड होना चाहेगी, और मैं बोलूँ कनकेटिनेट होना चाहेगी, वो हमेशा अपने आप ही वो डाटा टाइप स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। ओके, नाउ जावा में इक्लिप्स में एक और फायदा है कि हम डीबग मोड चला सकते हैं। बाय डीबग मोड हम लाइन बाय लाइन कोड चला सकते हैं। कैसे? यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, एक पॉइंट आ गया। अब वो पॉइंट, अब ये जो यहाँ पर डीबग दिख रहा है, ये कुछ डीबग हम्म। जैसा, आपको कुछ कीड़े जैसा बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये डीबग मोड में स्विच हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे कोड यहाँ पर आकर रुक गया। अब F6 दबाऊंगा, अभी अभी देखोगे तो ए की वैल्यू कुछ नहीं है, दिखाएगा। अब भी मैं करूंगा F6, अब देखना ए की वैल्यू दिखाएगा ये 100। तो मैं, और अब देखोगे जैसे मैं लाइन लाइन पर कोड प्रिंट करता जाऊंगा, मैंने F6 दोबारा दबाया, इसने प्रिंट कर दिया नीचे, दोबारा F6 दबाया, फिर दोबारा इसने प्रिंट कर दिया। तो मैं अपना कोड इस लाइन बाय लाइन भी चेक कर सकता हूँ। ओके, और अगर मुझे सपोज बहुत लाइन कोड है मेरा लंबा, जो कि 100 लाइन का कोड है, एक मैंने 10वें नंबर पे लगाया, एक मैंने 100वें नंबर पे लगाया, और मैं चाहता हूँ 10 से लेकर 100 तक मैं डायरेक्ट चला जाऊं, हम्म। तो कैसे करूंगा? मैंने दो समय दो ब्रेक पॉइंट लगा दिए। अब दोबारा मैंने डीबग मोड में चलाया, ये रुक गया। अब मुझे अगले ब्रेक पॉइंट पे जाना है, तो मैं F8 दबाऊंगा, ये अपने आप अगले ब्रेक पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सारा प्रोजेक्ट ये इकट्ठे रन एक करना बार है, फिर से बताना, ये आपने ब्रेक पॉइंट इसमें ऐड कैसे किए थे? जैसे यहाँ ये आप ब्लू पट्टी देख रहे हो ना, ब्लू लाइन, हम्म। यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देना, डबल क्लिक करोगे तो लग जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो हट जाएगा। ओके, तो ये कहीं पे भी ऐसे ऐड कर कहीं सकते पर हैं भी हम? आप लगा सकते हो, जैसे कि मैंने अगर चाहूँ, मैं यहाँ लगा सकता हूँ, मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ, मैं जितने मर्जी ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। ठीक है ओके। ना। अब सपोज मेरे को यहाँ पर पता चल गया, मैंने यहाँ तक, इसके बाद मैं सीधा अपने अगले ब्रेक पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, तो मैं F8 दबाऊंगा। अब मेरे को यहाँ पर पहुंच गया,
अगले ब्रेक पॉइंट पे जाना है तो F8, फिर अगले ब्रेक पॉइंट पे जाना है 15 नंबर पे है, वो F8। F8 से मेरा ब्रेक पॉइंट पे जाता है, या फिर अब समझ लो इसके बाद कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो सारा कोड इकट्ठा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। ओके। और F6 का मतलब है लाइन बाय लाइन। ओके। ओके। सो डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब हमारा कोड पढ़ जाता है 50 लाइन, 100 लाइन, 150 लाइन, सपोज मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा कहाँ पर एरर आ रहा है, तो मैं उसको लाइन बाय लाइन कोड को डिबग कर सकता हूँ, और मैं देख हम्म। सकता हूँ कि मेरा कहाँ पर कोड एरर दे रहा है। ओके। ठीक है। तो आज के लिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ, क्योंकि थोड़े नए कंसेप्ट्स हैं, और मैं चाहूँगा कि मैंने आपको पहले ही बोला था पिछली क्लास में भी कि आप एक एक्सेल मेंटेन करो जिसमें डे वाइज टॉपिक लिखो, और उसमें जो जो मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद को इंटरव्यू लेता हूँ, आप उस हिसाब से हम्म। इसके इंटरव्यू की क्वेश्चंस की तैयारी करो, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर ही जा रहे हो। ठीक है ना, और जावा में यस। जा रहे हो, अगर एक बार जावा में एंट्री मिल जाए तो आगे बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो कहीं पे भी एंट्री मिल जाए तो आसान हो जाता है, लेकिन जावा में मिल जाए तो ज़्यादा आसान होता है। आप ठीक मुझे है। कल के लिए थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट बता दो जिसको मैं पहले से थोड़ा थियोरेटिकली रेडी उन करके रखूंगी, तो आप कल पढ़ाओगे। कंसेप्ट है स्ट्रिंग्स के बारे में है, कि स्ट्रिंग को जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं, सपोज मैंने ये दो स्ट्रिंग ली हैं, अगर मैंने इनको हम्म। कंपैरिजन करना है तो हम कैसे करते हैं, अगर आपको इफ वाला पता हो, मैं बोलूंगा इफ एक्स इक्वल टू वाई, ये लिख करते हैं ना हम, कि भाई ये दोनों इक्वल है कि नहीं। ओके। इसमें इसमें हम ये यूज नहीं करेंगे, वैसे हालांकि मुझे ये भी आंसर दे देगा। अब देखोगे तो, अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट निकालूं, तो यस ओ, और मैं हम्म। लिखूं एक्स इक्वल टू वाई, और मैं इसको रन करूं, ये मुझे फॉल्स देगा, फॉल्स। क्योंकि क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम्म। ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न देगा, बट ये गलत है, ये तरीका ही गलत है। इस तरीके से हम इसमें जावा में काम नहीं करते, क्योंकि स्ट्रिंग एक इनबिल्ट क्लास है, तो हम इसके इनबिल्ट फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे। जो भी हम स्ट्रिंग की वैल्यू में कुछ भी करेंगे, वो सब इनबिल्ट फंक्शंस करेंगे। इनबिल्ट ओके। फंक्शंस क्या होता है, अगर मैं देखूं एक्स, मैं लिखूं यहाँ पे डॉट, अब देख रहे हो, ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। हम अगर हमने कुछ कंपैरिजन करवाना है तो हम करेंगे इक्वल्स वाई। ये ओके। ये इनबिल्ट फंक्शन है। क्या हमेशा इनबिल्ट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जावा एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल लैंग्वेज है, ये आपको एरर देगी कई बार, ये कई बार नहीं देगी, अगर आप इसके इनबिल्ट फंक्शंस नहीं यूज करोगे। ओके। मतलब ओके। अगर हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे तो हमारे एरर के चांसेस जो हैं वो डिक्रीज हो बहुत जाएंगे। कम है, बहुत कम है। ओके। तभी ये स्ट्रिंग इनबिल्ट क्लास है, तभी इन्होंने स्ट्रिंग की एक क्लास अंदर बनाई है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जावा में और कुछ भी आप इसमें टेस्टिंग में भी 98% हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। 90 मान लो, बाकी आप 8 से 9% इंटीजर लगा लो। राइट।